Good evening, dear students. Welcome to matrixdigilearn, and today we'll discuss about the computer awareness. The questions are on your screen. The first question for you: a computer program is, options are, a set of instructions that enable the computer to solve a problem or perform a task. Option B, main memory. Option C, pseudo code. Option D, a flow chart. And option E, none of these. Which is the right answer among these options? A computer program is, computer program actually में काहाकू कहिबा? Option A, option B, option C, option D, या फिर option E. Which is the right answer? Anyone can give response? A computer program is a. The right answer is a set of instructions that enable the computer to solve a problem or perform a task. Computer program जहाँ को नहीं कि हमें कि different software गुड़ा का development करूँ, जहाँ देरे coding लिखिला परे बा जहाँ को use करी coding लिखिला परे different type of software गुड़ा का development ही थे, ताकि ही हमें actually उड़े computer program को जैसे कि C ही परे, C++ ही परे, Java ही परे, Python ही परे, जहाँ भी हो प्रोग्रामिंग को लेके ही हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर उड़ा डेवलपमेंट करू. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू: इन सेकंड जनरेशन डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बाइनरी लैंग्वेज. ऑप्शन ए, असेंबली लेवल लैंग्वेज. ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज. ऑप्शन सी, लो लेवल लैंग्वेज. ऑप्शन डी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. एंड ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दीज. सेकंड जनरेशन रे जहाँ की डेवलपमेंट हेतिला बाइनरी लैंग्वेज परे से जिनसडा कोन. इफ एनीवन नो द आंसर, सिंपली गिव योर रेस्पॉन्स बाय चैट. मु चैट भी देखि परछि सामने रे. तमे जदि के राइट आंसर जानि छ तमे रेस्पॉन्स देई परिबो चैट करिकि. इन सेकंड जनरेशन डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बाइनरी लैंग्वेज. एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स? Option A is the right answer. No, option D is wrong answer. Option A is the right answer. That is the assembly language. Third generation को असला high level language. किंतु हमारो option A टा होची right answer. जोड़ा को कहंती हमारो कोन assembly level language. You have give response as option D. That is wrong. Data definition language. That is related with the SQL, DDL, DML, this TCL एवडा कहूची हमारो SQL सहित involve. So option D टा wrong answer. Option A टा होची right answer, assembly level language. Okay. Next question for you: which layer of OSI model performs segmentation of data stream? Option A, application layer. Option B, network layer. Option C, transport layer. Option D, physical layer. And option E, none of these. Open source interface जोड़ा हमें कहूचे बा OSI model कहूचे ता धियरे हमर डिफरेंट सात प्रकार लेयर थे. ताले मोर कहिबा कथा होची सेगमेंटेशन टा एक्चुअली को जगह रे हुए, को लेयर रे हुए. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई. एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स? इफ एनीवन नो द आंसर, सिंपली गिव योर रेस्पॉन्स बाय चैट.
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। सेगमेंटेशन टा एक्चुअली ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर रही थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हिच प्रोसेस checks to ensure components of the computer or operating system and connected properly। एमानक भितर कोनटा से जिंस बा कोटा से प्रोसेस बा पद्धति जो पद्धति रे कि आमे गोटे एनश्योर होई जो बा सियोर होई जाऊ जे कंपोनेंट्स गुडा को कंप्यूटर रे ठीक ठाक चालुची, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ठीक ठाक चालुची, बा जहां भी डिवाइस गुडा कनेक्टेड हे अछि छोड़ा सब ठीक ठाक काम करूची। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी सेविंग, ऑप्शन डी एडिटिंग एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। एमानक भितर कोटा होची से राइट प्रोसीजर जोटा कि हमरो चेक करिथाय ए एक्टिविटी गुडा को। गिव रेस्पॉन्स as B, that is wrong answer। The right answer is, anyone can give the response? The right answer is, again, the right option is booting। कंप्यूटर रो बूटिंग बा स्टार्टिंग हेले ही हमें जानि पारु जे कोन कंप्यूटर रे ठीक ठाक चली छि नने, ताल जो स्टार्टिंग प्रोसेस टा को जे बूटिंग बोली। तेनु करी बूटिंग प्रोसेस से गेला पर हमें जानियो जे जो डिवाइस छोडा कनेक्टेड है ठीक ठाक चालू छि नने, जो ओएस टा हमर लोड है सेटा ठीक ठाक चलेला नने बा चालू हेला नने, ए सब जिंस छोडा को जाना पड़ी थाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ए मींस ऑफ कैप्चरिंग एन इमेज, ड्राइंग और फोटो so that it can be stored on a computer is। जहा आर भितर गोटे किछि गोटे माने जहार माने होची कि गोटे फोटो होई पारे बा ड्राइंग होई पारे जहा कि हमर स्टोर हुए कंप्यूटर रे, तो दैट थिंग इज नोन एज ए मॉडेम। ऑप्शन बी होची सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी होची स्कैनर, ऑप्शन डी होची माउस एंड ऑप्शन ई होची नॉन ऑफ दिस। एमानक भितर कोन से जिंसटा you give response as option B। option B is wrong answer। गोटे आ माने होची कैप्चरिंग करिवो, कैप्चरिंग माने ताको आनिवो गोटे फोटो बा इमेज तमे हाथ रे धरिछो, से फोटो बा इमेज रो तमे कोन करिवो ना ताको कंप्यूटर को आनिवो, स्टोरिंग करिवो। ताले से जो कैप्चरिंग करिवा पद्धतिटा को कोन बोली कहंती बा कोन बोली तो नु जिंसटा को कोन बोली कहंती, दैट थिंग इज नोन एज स्कैनर। आमे गोटे सर्टिफिकेट रखिचे, गोटे फोटो रखिचे, आमे ताको कंप्यूटर भीतर को आनी स्टोर करबा को चाहूचे, एमी तो किसी बाट नै जे कंप्यूटर भीतर भर्ती कर दबो। दैट डिवाइस इज नोन एज स्कैनर व्हिच कैन क्रिएट द इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स और इमेजेस। गोटे फोटोग्राफ रो बा ड्राइंग रो बा इमेज रो जे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तयारी करे सेही जिंसडा होची स्कैनर। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हिच ऑफ दिस इज कंसीडर्ड इंटेलिजेंट केस टूल। एमानक भितर कोटा इंटेलिजेंट केस टूल बोली कहंती। ऑप्शन ए टूल किट, ऑप्शन बी वर्क बेंच, ऑप्शन सी अपर केस, ऑप्शन डी लोअर केस एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। एमानक भितर कोटा एक्चुअली गोटे केस टूल बोली कहंती। एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स, व्हिच इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज वर्क बेंच। अपर केस लोअर केस सेटा होछ अलगा कथा। जेतबले हमर गोटे टेक्स्ट स्ट्रिंग थाए ताको बड़ लेटर को कन्वर्ट करा जाय, छोट लेटर को कन्वर्ट करा जाय, बा प्रति वर्ड रो प्रथम लेटर को बड़ करा जाय, तो से क्षेत्र रे अपर केस लोअर केस एभली टर्म गुडा को यूज करा जाय। किंतु अपर केस लोअर केस क्षेत्र रे यार माने किछि नाही, तो दैट थिंग इज नोन एज वर्क बेंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। भारत रो वैज्ञानिक माने गोटे सुपर कंप्यूटर बाहर कले, तो एमान को लिस्ट भीतर ता नाम भी अछि। ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी सुपर 301, ऑप्शन सी क्रे, YMP, ऑप्शन डी ब्लू जेनी एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। इंडियन साइंटिस्ट को द्वारा डेवलपमेंट हेतिबा सुपर कंप्यूटर रो नाम कोन? समवन गिव एज रेस्पॉन्स ऑप्शन सी, दैट इज रॉन्ग आंसर। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट को द्वारा डेवलप हेतिबा सुपर कंप्यूटर रो नाम कोन? Anyone can give response again? The right answer is Param। Param होची हमरो डेवलपमेंट हेतिला इंडियन साइंटिस्ट मान को द्वारा, that is a super computer। Okay, next question for you, in Excel, फर्स्ट थिंग गोटे जिंस तुम क्लियर कर दबा पई चाहूची
जे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान करे अप्रोक्सीमेटली गोटे क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई तमे 37 टू 38 सेकंड पाइबो सो तारि भीतर तुमको क्वेश्चन टाको सॉल्व करिया को पड़िबो काहे कि ना तुमको सर्टेन टाइम भीतर 100 रु 150 पर्यंत क्वेश्चन सॉल्व करिया को पड़िबो एंड दैट इज 1.5 आवर दिहाइतिबो तो ता भीतर एते गुडा क्वेश्चन माने अप्रोक्सीमेटली तुम हिसाब करियो 37 टू 38 सेकंड पडुची गोटे क्वेश्चन पे पुनी भूल क्वेश्चन कले माइनस मार्किंग भी आसुची सो बी केयरफुल टू अटेंड द क्वेश्चंस इन एक्सेल dash is pre-recorded formula that provides a shortcut for complex calculations excel ro emanako bitiru कोटा pre-recorded माने आगुर हेई जाईची बा pre-defined calculations बोली भी कहि परिबो जहा की शॉर्टकट दिया जाईची जहा की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ओडा करि दबो तुमको मैनुअली करिया को पड़िबो नाही आउडी सिंपलीफाई कर दोची that are the pre-defined calculations already given name for easy use ऑलरेडी से कैलकुलेशन उडा कर ना दिया जाईची जहा को जने सहज रे व्यवहार करि परिबो एक्सेल एक्चुअली ताको कोन बोली कहंदी ऑप्शन ए फंक्शन ऑप्शन डी डाटा सीरीज ऑप्शन सी वैल्यू ऑप्शन डी फील्ड एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स इन एक्सेल dash is a pre-recorded formula that provides a shortcut for complex calculations ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई व्हिच इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज फंक्शन एक्सेल रो फंक्शन जो फार्मूला होची जोटा मैनुअली आमे हिसाब करू फंक्शन रो ऑलरेडी सब डिफरेंट नाम दिया गय जेमति कि सम रे आमे गोटे डाटा रेंज रो मिश्रण फल बाहर करिवा एवरेज रे गोटे डाटा रेंज रो अरिथमेटिक मीन बाहर करिवा मीडियन रे गोटे डाटा रेंज रो मीडियन बाहर करिवा मैक्स रे गोटे डाटा रेंज भितर सबठारु बड़ वैल्यू बाहर करिवा मीन रे डाटा रेंज रो सबठारु छोट वैल्यू बाहर करिवा अपर फंक्शन रे यूज करी कि सब तक अक्षर को बड़ करिवा बा कैपिटल करिवा एवं लोअर को व्यवहार करी सब लेटर गुडा छोट करिवा तो हमु किछि एठी कैलकुलेशन करिवा को पडु नाही ऑलरेडी दैट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन गुडा का नाम दिहाई के रहि जाईछि बा प्री रिकॉर्डेड हेइ के अछि दैट थिंग इज नोन एज फंक्शन ओके नेक्स्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फंक्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे ए रिप्लेस ऑप्शन ता को जगह रे अछि ऑप्शन ए फाइल मेनू ऑप्शन बी व्यू मेनू ऑप्शन डी एडिट मेनू ऑप्शन डी फॉर्मेट मेनू एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस in Microsoft Word replace option is available on very simple question बेले बेले हमको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लागे कारण ऑप्शन गुडा को भी कोठी अछि भी हमको नजर रे रखिबा को पड़िबो तो इन Microsoft Word बा इन Word replace option is available in which option बा को जगह रे एटा अछि anyone can give response that is in edit तो हमरो तुम कंफ्यूज करिया पे एंत लिखा आइछि बट पांच जो ऑप्शन अछि ओडे क्लिपबोर्ड अछि ओडे फॉन्ट अछि ओडे पैराग्राफ अछि ओडे स्टाइल्स अछि ओडे एडिटिंग अछि तो एडिट भीतर ही अछि फाइंड रिप्लेस गो टू सिलेक्ट ऑल ए सब जिंस ओडा को सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एडिट मु तुमको अप्रोक्सीमेटली 37 टू 38 सेकंड पर्यंत भाबिया को देबी तापर आंसर टाइम कहि देबी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी एमानक भितरु कोटा में व्यवहार करू हैंड रिटन बा हाथ रे लिखा जाइतिबा बा प्रिंटेड टेक्स्ट जोडा जा छपा जाई थाए डिजिटल इमेज को कन्वर्ट करिया पई मेमोरी रे ऑप्शन ए प्रिंटर ऑप्शन बी स्कैनर ऑप्शन सी टच पैड ऑप्शन डी लेजर बीन एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस ए डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी एमान को भितर कोटा हाथ रे लिखा जाइतिबा बा प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज को कन्वर्ट करी की मेमोरी स्टोर करी थाए एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स दैट थिंग इज नोन एज लेजर बीन तो लेजर बीन द्वारा ए कामटा करी हुए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एमान को भितर कोटा कंप्यूटर गोटे मेजर काम नुह ऑप्शन ए प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन गैदरिंग डाटा
and none of these. एमानक भितरु कोटा कंप्यूटर गोटे मेजर फंक्शन नुह. Anyone can give response? Option A, option B, option C, option D, या फिर option E. Which is the right answer? Which is not a major function of computer? Computer a major function कोटा नुह. The right answer is this thing, option C, analyzing data or information. Computer रो मुख्य काम होची पांचटा. गोटेला इनपुटिंग, गोटेला स्टोरिंग, गोटेला प्रोसेसिंग, गोटेला आउटपुटिंग, आ गोटेला कंट्रोलिंग. ताले कंप्यूटर मुख्यतः पांचटा काम करता है. इनपुट डाटा, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा, आउटपुट डाटा एंड कंट्रोल. ताले या भितरु एई जिनसटा होची नुह. ताले हमर ऑप्शन सी होची रॉन्ग आंसर, जोटा होची एनालाइजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन. डाटा एनालिसिस बोली सेमति कि छोटे न थाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Option question number 2, a disk on which you store information is called. गोटे डिस्क जो थरे कि आमे इंफॉर्मेशन ओडा को स्टोर करू ताको एक्चुअली आमे कोन बोली को. ऑप्शन ए प्लेट, ऑप्शन बी डाटा डिस्क, ऑप्शन सी पेपर डिस्क, ऑप्शन सी टीवी डिस्क, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. These questions are very important for the banking, CGL and your SSC exams. Just like this type of questions may come. Today's market, computer questions is something technical way asked by different exams. So questions patterns like this. Okay, you can give response. Anyone can give response. A disk on which you store information is called. जो थिरे आमे information store करू से disk टा को आमे actually exactly कौन बोली कहू. Anyone can give response. If know the answer, simply give response by chat. I can see in the screen. The right answer is option B, data disk. ताको data disk कौन data store होची ना, तो data disk. Simply think. Okay, next question for you. A desktop computer is also known as. गोटे desktop computer को आमे otherwise कौन बोली कहू. बहुत simple question. Option A, Palm Pilot. Option B, PC. Option C, laptop. Option D, mainframe. And option E, none of these. A desktop computer is also known as. गोटे desktop computer को otherwise हमें कौन बोली भी कहू. A desktop computer is otherwise known as. गोटे desktop computer को otherwise हमें कौन बोली कही था. Option A, you give response as option B. Yes, that thing is right answer. Personal computer বা PC बोली कही था. Yes, option B is the right answer. PC. Okay, next question for you. The name given to document by its user is called. गोटे document रो नाम में दौचे user द्वारा. Exactly ताको कौन बोली कहा जाए. Option A, file name. Option B, file type. Option C, data. Option D, record. And option E, none of these. The name given to a document by its user. User द्वारा दे जाता document रो नाम को exactly term ता कौन बोली कहा जाए computer भाषा रे. Option A, file name. Option B, file type. Option C, data. Option D, record. And option E, none of these. Anyone can give response. Someone give response as option A. Yes, that thing is known as file name. User द्वारा दिया जाउथबा नाम को exactly हमें file name बोली कहितो. Option A is the right answer. Okay, next question for you. Devices that make up a computer system that you can see or touch. Devices that make up a computer system that you can see or touch. से डिवाइस गुड़ा को जहाँ को कि कंप्यूटर सिस्टम रा में छुई परिबा. ऑप्शन ए मेनू, ऑप्शन बी प्रिंट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हार्डवेयर एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. व्हिच इज द राइट आंसर. डिवाइसेस दैट मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी और टच. डिवाइस गुड़ा को जहाँ को कंप्यूटर सिस्टम को तैयारी करे जहाँ को हमें छुई परिबा देखि परिबा से जिनसोटा को एक्जाक्टली हमें कौन बोली कहू.
Anyone can give response? Someone give response as option D. Someone give the A, that is wrong answer. That thing is known as D, hardware. ताको हार्डवेयर पेरिफेरल्स कहती बा हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोली कहती सब जिन गुड़ा कंप्यूटर जहाँ लगी थाए जहाँ को देखिपार छुई पारू सेगुड़ा गोटे गोटे हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोली कंप्यूटर कहती ताकू नहीं ही कंप्यूटर सिस्टम तैयारी हुए ताले कंप्यूटर सिस्टम रे बेसिकली इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस स्टोरिंग डिवाइसेस एम सब नहीं की हार्डवेयर कंपोनेंट्स गुड़ा कंप्यूटर सिस्टम तैयारी हुए ओके व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर What is Windows Explorer? Option A drive. Option B, a personal computer. Option C, a network. Option D, a file manager. And option E, none of these. What is Windows Explorer? Windows Explorer ta exactly कौन? Option A, Option B, Option C, Option D या फिर Option E. What is Windows Explorer? समस्त आम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रो व्यवहार करूचे हिंट्स भी दे सारानी मु तादरे जो विंडोज एक्सप्लोरर माने कोन छिटा ए टर्म रो माने कोन एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स someone give response as option C. Option C, that is wrong answer. Option C नुहे, that is option D, a file manager. आमे जेतले विंडोज एक्सप्लोरर यूज करू कंप्यूटर सारा जिंस गुडा को गोटे स्क्रीन रे देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेस ऑल द डिस्क ड्राइव्स अवेलेबल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जहां सब डिस्क ड्राइव गुडा थाए जेमि हार्ड डिस्क रो पार्टीशन होइची सी डी ई जहां भी पार्टीशन होइची सब देखौथिबो कि आमे पेन ड्राइव पे लगेचे से भी देखौथिबो जहां भी डिस्क ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्टेड सब लेफ्ट हैंड साइड रे देखौथिबो से स्क्रीन रे एबो राइट हैंड साइड रे तो सिलेक्टेड कंटेंट्स ऑफ ए डिस्क ड्राइव और फोल्डर कैन बी शोन मन कर मु पेन ड्राइव टा सिलेक्शन कली ता भितर कोन अछि राइट हैंड साइड रे देखौथिबो सो विंडोज एक्सप्लोरर माने सी द ऑल कंटेंट्स इन वन स्क्रीन सब कंटेंट्स कंप्यूटर गोटे स्क्रीन रे देखौथिबो दैट इज अ फाइल मैनेजर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड रे एरर को फाइंडिंग करबा को एग्जैक्टली कोन बोली कहंती ऑप्शन ए डीबगिंग ऑप्शन बी कंपाइलिंग option C interpreting, option D testing, and option E none of these. Very useful, very important, and such type of questions can come your CGL, SSC and banking exams. Dash is the process finding errors in software code. Option A, option B, option C, option D या फिर option E. Which is the right answer? Anyone can give response? Someone give response as option A, S. Bug means error and debug means detect the error. Error को खोजिबा bug माने होची error को खोजिबा को debug बोली कहंती. ताले debug is the process finding errors in software code. Okay, next question for you. In Excel, charts are created using which option? Excel रे chart आमे creation करिबा को option रे Option A, chart wizard. Option B, pivot table. Option C, pie chart. Option D, bar chart. And option E, none of these. In Excel, charts are created using which option? Excel रे chart आमे creation करिबा को option रे use करी. Anyone can give response? Which is the right answer? In Microsoft Excel, charts are created using which option? Microsoft Excel रे chart आमे creation करिबा को option रे use करी. The right answer is chart wizard. Chart wizard को गले आमे different प्रकार chart उडा पाउ सेठी. Line chart, pie chart, bar chart, x-y scatter chart. Every charts are available there, and you can use appropriate chart for represent your data. Okay, next question for you. Dash represents raw facts, whereas dash is data made meaningful. कौन टा represent करे data को raw fact रे जोटी की
कौन टा रिप्रेजेंट करे और डाटा को किछि माने थिबा वे रे बा किछि मीनिंगफुल वे रे ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग ऑप्शन बी डाटा इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन बीट्स ऑप्शन डी बीट्स बाइट्स and none of these. Anyone can give response? Dash represents raw facts, whereas dash is data made meaningful. Anyone can give response? Option A, option B, option C, option D, या फिर option E. Which is the right answer? Someone give response as option C. That is wrong answer. The right answer is option B, data and information. Data represents raw facts, whereas information is data made meaningful. कही आछि बहुत थोर भी data, any raw form of information is known as data, and after processing data converts to information. कौन सी raw fact को हमें data कहउतला बेले से data गुडा को विभिन्न स्टेप दे कि प्रोसेसिंग हे गला परे इनफॉरमेशन को कन्वर्ट होई जे ताले डाटा माने होची तथ्य इनफॉरमेशन माने होची सूचना गोटे छोटो एग्जांपल भी मु तुमको देइथिली जेमति कि धरिनियो आज रवि टॉकीज छकरे गोटे एक्सीडेंट हैला से एक्सीडेंट रो विभिन्न फैक्ट हमको कलेक्ट करियो पड़िबो को गाड़ी रे हैला से गाड़ी रो को पटु से आसुतिला को समय रे हैला को जगह रे हैला बहुत सारा जिंस आ जेतरा ताको न्यूज़ एंकर देले पढिबो আজি রবি টকি ছকরে বিপরীত দিগরু আসুতিবা এই দিগরু আসুতিবা গাড়ি অমুক ভাবে ধক্কাধক্কি হেলে অমুক সমୟରେ and অমুক জায়গাରେ that is a meaningful information তাকে ইজিলি জনে বুঝি দেই পারিবো so any raw form of information is known as data and after processing data converts to information very very out ছোট ভালো সুবিধার एग्जांपल দেই দউছি খরা হচ্ছে জুস দোকান को জুস পিए ପାଇଁ গলো জুস দোকাन তম ପାଇଁ জুস বনেই নাই সেওর টুকুড়া নব पानी नब चीनी नब लुण नब कमलार किसी टुकड़ा नब अंगुर किसी नब तो आम जाने जे कौन सी जिनसटा तैयारी हम से जो जिनसटा दरकार अच्छे आमको जूस बनैबा दैट इज द डाटा ग्राइंडर रे पुरे घंटिला दैट इज द प्रोसेसिंग एंड जो टेस्टी जिनसटा गैस ग्लास हमको सर्व कला दैट इज द इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल थिंग सो इंफॉर्मेशन सब डाटा ऊपर डिपेंडेंट होता है कि डाटा के भी इंफॉर्मेशन ऊपर डिपेंडेंट हुए ना सो रॉ फैक्ट इज नोन एज डाटा and finished result or meaningful result is known as information. So option B is the right answer, data and information. Okay, next question for you. What is the storage area for email message called? Email में बहुत हमें समस्त email रे यूज करूचे ताले email message रो स्टोर करिबा जागा हमर स्पेशली कोन कहै छै एक्चुअली ए टर्म ता मु हिंट्स भी दे दोची आउटलुक रे ही टर्म ता यूज हुए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जेमते हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहूचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहूचे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहूचे माइक्रोसॉफ्ट एसेस कहूचे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक रे टर्म कथा सुनिया को मिले ऑप्शन ए फोल्डर ऑप्शन बी ए डायरेक्टरी ऑप्शन सी ए मेल बॉक्स ऑप्शन डी द हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड ईमेल मैसेज रो स्टोरिंग करिबा पई एरिया को एग्जैक्टली कोन बोली कहंती anyone can give response that thing is known as option C mailbox ताको मेल बॉक्स बोली कहंती आउ किछि भी नहीं फोल्डर होची समथिंग डिफरेंट जोटी हमें फाइल गुडा को स्टोर कर डायरेक्टरी भी सही सेम जिंस किंतु कमांड लाइन क्षेत्र रे हमें डायरेक्टरी बोली कहितौ नहीं नेक्स्ट होची हार्ड डिस्क तो नुह हार्ड डिस्क तो स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस so that is the mailbox option C is the right answer mailbox okay next question for you a dash is a unique name that you give to a file or information गोटे यूनिक नेम जहाँ कि तमे फाइल को पाइन देई थाओ बा गोटे फाइल रो इंफॉर्मेशन को रखिबा पाइन देई थाओ ऑप्शन ए फोल्डर ऑप्शन बी फाइल नेम ऑप्शन सी फाइल नेम एक्सटेंशन option D device letter and option E username. These are the very technical questions and very very important questions. A dash is a unique name that you give to a file or information. Anyone can give response? A dash is a unique name that you give to a file or information. Obviously
फाइल नेम तो फाइल ना ही तो दबाक पड़ो ना फाइल एक्सटेंशन होची कोन अलगा कथा फाइल एक्सटेंशन होची फाइल रो कैटेगरी को आइडेंटिफाई करिया पई जेंति कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे हम व्यवहार करू .docx माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे व्यवहार करू .xlsx पावर पॉइंट रे व्यवहार करू .pptx दैट इज द कैटेगरी को आइडेंटिफाई करिया पई किंतु से कहितिला इंफॉर्मेशन उडा को फाइल रो रखिया पई कोन दिया जाय ऑब्वियसली ऑप्शन बी दिया जाय फाइल नेम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द टास्क बार इज लोकेटेड very easy question टास्क बार हमर कोठी ऑप्शन ए ऑन द स्टार्ट मेनू ऑप्शन बी at the bottom of the screen option C on the quick launch toolbar option D at the tool of the top of the screen and option E none of these the task bar is located task bar टा exactly कोठी अछि हमर anyone can give response task bar टा कोठी अछि बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इजी क्वेश्चन टा task bar is located at task bar टा को जगह रे अछि exactly task bar हमर को जगह रे अछि option B is the right answer at the bottom of the screen task bar टा जो हमें डेस्कटॉप देखुचे ता तळे थाए लेफ्ट हैंड साइड रे स्टार्ट बटन बा जदी एडवांस विंडोज वर्जन अछि मिडिल रे अछि मोर स्टार्ट बटन राइट हैंड साइड रे डेट एंड टाइम इंडिकेटर आ जहा जहा टास्क बटन्स गुडा का आड होते बा कंप्यूटर रे जहा जहा हमें काम करूथौ सब किछि से बाहर जणा पड़े ताले से बारटा कोड थाए ऑब्वियसली डेस्कटॉप रो तळे बा बटन रे ही थाए सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी एमानक भितरु कोटा गोटे कनेक्टिविटी रो उदाहरण ऑप्शन ए डाटा ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन सी power cord option D internet and option E none of these anyone can give response which of the following is an example of connectivity ro emanako bitru कोटा house example which is the example of connectivity एमानक भितरु कनेक्टिविटी रो कोटा होचे एग्जांपल एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क that connects the computers all over the world so that is the example of connectivity so option D is the right answer internet okay next question for you which of the following is not a web browser emanako bituru कोटा गोटे web browser नुह option A internet explorer option B google chrome option C twitter option D mozilla firefox option E opera which of the following is not a web browser emanako bituru कोटा गोटे web browser नुह option A option B option C option D या फिर ऑप्शन ई which is not the following is a web browser anyone एमानक भितरु कोटा वेब ब्राउजर नुह yes give response as option C and that is the right answer Twitter that is a social media not a web browser इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप हेतिला वर्तमान बंद हो जाइछि सेटा ता जगह माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च हेछि गूगल क्रोम दैट इज आल्सो बाय यू गूगल सो दैट इज आल्सो वेब ब्राउजर ता द्वारा भी हमें वेब ब्राउजिंग करू मोजिला फायरफॉक्स ता मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलपमेंट ता द्वारा मध्यम करा जाय ओपेरा भी हमें भी वेब ब्राउजर हिसाब रे यूज करू सो ट्विटर इज नॉट ए वेब ब्राउजर दैट इज ए सोशल मीडिया लाइक फेसबुक व्हाट्सएप व्हाट मे बी Okay, next question for you. So right answer is option C, Twitter. Next question for you. Dash is not a graphic file format that allows animation to be viewed on a computer. एमानको भितरु कोटा गोटे ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नुह जहा कि हमें कंप्यूटर रे फाइल देखिया पे यूज करू एमानको भितरु कोटा गोटे ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नुह ऑप्शन ए पीएनजी ऑप्शन बी जीआईएफ
ऑप्शन सी EMF, ऑप्शन डी WMF एंड ऑप्शन ई MP3। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टा, बहुत बहुत मजादार क्वेश्चन टा। ऑलरेडी जने आंसर भी प्रोवाइडिंग करि सारलेनी। एनीवन कैन, एनी अदर कैन गिव रेस्पॉन्स। एमानक भितर कोटा से ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नुह, इजिली भी जना पड़ जाउची कोटा ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नुह। The right answer is option E, MP3. That is not a graphic format. PNG एटा गोटे ग्राफिक फॉर्मेट, पेंट रे फाइल कले सेव करू, GIF आमे जो मूविंग करू नहीं कि ग्राफिक इमेज फॉर्मेट, EMF भी, WMF भी सब गोटे गोटे वीडियो फॉर्मेट बा पिक्चर फाइल फॉर्मेट। किंतु MP3 टा होची गोटे ऑडियो लेयर 3 बा गीतर माने फॉर्मेट के ओनली सॉन्ग्स रो बा ओनली ऑडियो रो वॉइस रो ए टाइप रो पई MP3 रो यूज करा जाय। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, MP3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। A process known as dash is used by large retailers to study trends। इमान को भितर गोटे पद्धति अछि जो पद्धतिटा की हमर रिटेलर मानकर व्यवहार करे जे ट्रेंड गुडा को स्टडी करिबा पई। ऑप्शन ए डाटा माइनिंग, ऑप्शन बी डाटा सिलेक्शन, ऑप्शन सी पोस्ट, ऑप्शन डी डाटा कन्वर्सेशन एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। इमान को भितर गोटे प्रोसेस जहा की व्यवहार करा जे रिटेलर मान को पई ट्रेंड्स गुडा को जानिबा पई, माने केमति कोन चाली छि जिंस ट्रेंड्स करिबा पई बा ट्रेंड्स पई से माने यूज करंती। ऑप्शन ए डाटा माइनिंग, ऑप्शन बी डाटा सिलेक्शन, ऑप्शन सी पोस्ट, ऑप्शन डी डाटा कन्वर्सन एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। यू गिव रेस्पॉन्स एज ऑप्शन सी, रॉन्ग आंसर, नॉट पोस्ट। रिटेलर मानक द्वारा व्यवहार करा जाए किसी ट्रेंड्स को स्टडी करिबा पई, से प्रोसेसेस माने ट्रेंड्स गुडा को स्टडी करंती। दैट थिंग इज नोन एज डाटा माइनिंग। ऑप्शन ए डाटा माइनिंग, आमे जेमति कहू माइनिंग, माइनिंग माने खोलिबा, खनि रु बाहर करिबा जिंस। तो मु सब बेले तुमको कहि आसी प्रीवियस क्लास गुडा करे आईटी बा कंप्यूटर होची एबडी गोटे पाठ, सेतरे किछि इंग्लिश टर्म यूज हुए, किछि टेक्निकल टर्म यूज हुए एंड किछि डिफरेंट। तो टिके खाली आइडिया खर्च करले भी जणे इजीली आंसर टाको फाइंड आउट करि परिबो। सो डाटा माइनिंग कहंती, डाटा गुडा को माइनिंग करिबा बा डाटा गुडा को एक्सट्रैक्ट करिबा, दैट थिंग इज नोन एज डाटा माइनिंग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट ऑफ ए पीसी? व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट ऑफ ए पीसी? ऑप्शन ए portions of the operating system are compiled, option B portions of the operating system are copied from memory onto disk, option C portions of the operating system are copied from disk into memory, option D portions of the operating system are emulated, and option E the PC gets switched off. What happens when you boot off a PC? बूट अप माने मुटिके भी कहि दोछि खांटी ओडिया रे स्टार्टिंग करला बेले पीसी रो कोन एक्टिविटी टा हुए? एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स? यू गिव रेस्पॉन्स as option D, wrong answer. What happens when you boot up a PC? boot up माने स्टार्ट अप, गोटे पीसी टा बा पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट अप होबो ताले आ भीतर को एक्टिविटी टा कैरी आउट होउतिबो? Operating system is a complex series of programs which controls the overall operations of a computer. जदि OS बा ऑपरेटिंग सिस्टम न रहिबो गोटे सिस्टम ऑपरेट हे परिबोनी, चली परिबो नाही, ताले से ऑपरेटिंग सिस्टम कोन एक्टिविटी करथे? बूट अप माने स्टार्टिंग अप होले ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्टिंग होबो, तो तापर से कोन एक्टिविटी करिथे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। मेमोरी को पास कला परे ही कंप्यूटर बूटिंग अप होबो, तापर कोन काम होबो त मेमोरी रे से अनुसार प्रोसेसिंग चलीबो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। dash is when the more power hungry components such as the monitor and hard disk are put in idle। सबुठो पावर कंजप्शन करूथिबा जिंस हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जिंस गुडा सब यूज करजे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट गुडा का यूज करजे कंप्यूटर रे, ताधि सबुठो अधिक पावर कंजप्शन करथिबा जिंस जेंति हार्ड डिस्क टा, जेंति के मॉनिटर टा, एडा सब
अधिक पावर कंज्यूम करंती बा व्यवहार करंती ताले से कहबा कथा सेटा कोन से जिंसटा को एग्जैक्टली कहंती ऑप्शन ए द शटडाउन प्रोसीजर ऑप्शन बी द स्टैंड बाय मोड ऑप्शन सी द पावर डाउन प्रोसीजर ऑप्शन डी द hibernation mode and option E none of these. Anyone can give response? Dash is when the more power hungry components such as monitor and the hard disk are put in idle. जेतबेले सबुठारु पावर कंजप्शन करूथिबा जिंस मॉनिटर हार्ड डिस्क वाली जिंसडा को आइडल कर दिया जाए बा आइडल हो जाए सेटा को एग्जैक्टली कंप्यूटर को मोड कहंती बा को जिंस सेटा को कहंती. Anyone can give response? What that thing is known as? That thing is known as option B standby mode. सेटा standby mode कहंती कंप्यूटर चालू थिबो किंतु किछि पावर कंजप्शन करिवनी सब मन मन बंद हो जिवो स्थिर हो जिवो पुनी एंटर मारला पर पुनी फंक्शन होबो ता दैट थिंग जो आमे जो कंप्यूटर शटडाउन करछे ताते चारि पांचटा ऑप्शन सब देखुची सेठी अछि शटडाउन सेठी अछि स्टैंड बाय सेठी अछि हाइबरनेशन सब अछि तो दैट थिंग इज नोन एज स्टैंड बाय मोड रे पके देले आउ से बेसी पावर कंजप्शन करिवो नाही. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एमानक भितरु कोउटा व्यवहार करे ओडे हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बा ओएस को. ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर ऑप्शन सी लैपटॉप ऑप्शन डी मदरबोर्ड ऑप्शन ई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस बा पीडीए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एमानक भितरु कोउटा ओडे हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवहार करथौ बा व्यवहार करिथाय. ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई. You give response as option B wrong answer. ताकू एक्चुअली कहंदी पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस हैंडहेल्ड हाथ रे धरि केंदी चलांदी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस सो हैंडहेल्ड रा एटा होची पीडीए. ऑप्शन ई इज द राइट आंसर पीडीए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू memory unit is one part of dash. Very interesting, very easy question. Memory unit is one part of dash. Option A monitor, option B central processing unit, option C output device, option D keyboard and option E mouse. Memory unit is one part of. मेमोरी यूनिट कहार पार्ट मेमोरी यूनिट ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बा सीपीयू रो पार्ट सीपीयू रो एक्चुअली दीटा पार्ट थाए गोटेला सीयू आ गोटेला एएलयू किंतु मेमोरी टा सीधा सड़क भी डायरेक्टली सीपीयू सहित कनेक्टेड हेता सो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Each dash on a menu performs a specific action. Each dash on a menu performs a specific action. Option A client, option B server, option C node, option D command and option E none of these. Each dash on a menu performs a specific action. एमानक भितर कोटा गोटे स्पेसिफिक एक्शन करथाय. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कमांड. कमांड द्वारा ही किछि गोटे स्पेसिफिक एक्शन हेतै बा गोटे स्वतंत्र रूपे काम होइथाय अन्य किछि भी नुहे क्लाइंट नुहे सर्वर नुहे कारण क्लाइंट आमे जानि छे जहा किछि सर्वर सहित कनेक्टेड होंदी से मान गोटे क्लाइंट करन जे कंटेंट्स सप्लाई करे बा सर्व करे से गोटा सर्वर बोली कहंती. तो ये किछि भी नुहे नोड मान होची जो डिवाइस गुडा का नेटवर्किंग रे कनेक्टेड होइते ता गोटे नोड बोली कहंती से सब किछि नुहे. ऑप्शन डी टा होची जिंसो जहा की किछि गोटे काम करिथाय कमांड द्वारा हिथाय. तो horizontal and vertical lines on a worksheet are called. The horizontal and vertical lines on a worksheet are called. Option A cells, option B sheets, option C block lines, option D grid lines, option E none of these.
The horizontal and vertical lines on a worksheet are called. Anyone can give response? Horizontal एवं vertical lines गुड़ाक कौन बोली कहुए? You give response as B. That is wrong answer. Sheet nuhe. Horizontal and vertical lines on a worksheet are called grid lines. Grid मान होची जाली बा गारो. जाली जाली बड़ी देखा जाए. तो horizontal माने एपडिया जो जोडा कहते हमर स्लीपिंग लाइन गुडा को आउ जोडा को vertical line माने जो स्टैंडिंग लाइन गुडा को. तो स्टैंडिंग लाइन गुडा पडिबा द्वारा कॉलम जनरेट हिताय एवं स्लीपिंग लाइन गुडा पडिबा द्वारा रो जनरेट हिताय. तो रो कॉलम रो सब्स्टिट्यूट पचारथले सेटा हेतांता सीट हेतांता. बट जेतु खाली गारो विषय कथा कुआइछि दैट आर नोन एज द ग्रिड लाइंस. सेति पई कहंती तो एक्सेल रो डिफॉल्ट प्रिंट मारला को डिफॉल्ट ग्रिड लाइंस गुडा प्रिंट आसीबो नै. तमे बॉर्डर एक्स्ट्रा दे कि प्रिंट मारो लाइन गुडा का आसीबो. तो ग्रिड लाइंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ग्रिड लाइंस. Okay, next question for you. To delete an incorrect character in a document, dash to erase to the right of the intersection point. Option A, press the left mouse key. Option B, press the delete key. Option C, press the backspace key. Option D, press the F9 key. And option E, none of these. To delete an incorrect character in a document, dash to erase to the right of the intersection point. Anyone can give response? To delete an incorrect character in a document, dash to erase to the right of the intersection point. Anyone can give response? What is the right answer? एमानक भितरु गोटे इनकरेक्ट कैरेक्टर को हमें डिलीट करिबा डॉक्यूमेंट रु राइट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट. राइट माने डाहण पटकू राइट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट सेटा कोटा को कीटा को हमें यूज करिबा. डिलीट की द्वारा मैं सेटा डिलीट करि पारे किंतु बैकस्पेस ले पछ को आसीबो लेफ्ट को आसीबो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिलीट की. Okay, next question for you. Dash document means the file is transferred from another computer to your computer. Dash a document means the file is transferred from another computer to your computer. गोटे कंप्यूटर आ गोटे कंप्यूटर तम कंप्यूटर को आसुची ताले सेटा कोन कहंती से एक्टिविटी टा. ऑप्शन ए अपलोडिंग. ऑप्शन बी रियली सिंपली सिंडिकेशन बा आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नुह असेसिंग डाउनलोडिंग एंड नॉन ऑफ दीज. मुझे आरएसएस लिखि पारि थांती किंतु कंफ्यूज क्लियर करया पे पूरा भलो भाबे लिखि देली. रियली सिंपल सिंडिकेशन सेटा कहंती. तो ई जो एक्टिविटी टा को कोन बोली कहंती? डैश इज ए डॉक्यूमेंट मींस कोन डॉक्यूमेंट रो माने जहा कि गोटे ट्रांसफर हुए अन्य गोटे कंप्यूटर रु तम कंप्यूटर को. एक्टिविटी टा कौन? यू गिव रेस्पॉन्स एज ऑप्शन ए. दैट इज रॉन्ग आंसर. ऑप्शन ए नुह अपलोडिंग नुहे. एक्चुअली रिवर्सली तमे कहिलो से प्रोसेस टा को डाउनलोडिंग कहंती. अन्य गोटे कंप्यूटर रु तम कंप्यूटर को आसुची दैट इज डाउनलोडिंग. जेतेबेले सर्वर रु कंप्यूटर को आसे दैट इज द डाउनलोडिंग. तम कंप्यूटर रु सर्वर को छाडीबा को कहंती बा रिमोट कंप्यूटर को छाडीबा को कहंती अपलोडिंग. सो द राइट आंसर इज डाउनलोडिंग. ऑप्शन डी. Okay, next question for you. Codes consisting of bars or lines of varying width or length that are computer readable are known as. Codes consisting of bars or lines. Bar माने जो इमति स्तंभ आकार भला थिबो बा लाइन आकार थिबो. varying width or length. width माने ओसार बा लंबा आकार जहा भी पारे. that are computer readable. कंप्यूटर ताको रीड करि परिबो. एग्जैक्टली से जिनसोटा को कौन कहंती? ऑप्शन ए बार कोड. ऑप्शन बी एन आस्की कोड. ऑप्शन सी ए मैग्नेटिक टेप. ऑप्शन डी ए लाइट पेन. एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. यू गिव रेस्पॉन्स as ऑप्शन ए. एस दैट थिंग इज नोन एज बार कोड.
ताको बार कोड बोली ही कहती सेतरे केते लाइन भलिया थाए केते कोटा बा मोटा स्तंभ भलिया थाए तो 4 5 8 9 0 एमती की पड़ी थाए तो बार कोड रीडर जेतले ता ऊपर पकई दिया जाए that can read the barcode and give the detailed information about that product price, quality, quantity, everything can feed to the computer. So that image is known as barcode. Option A is the right answer. Okay, next question for you. When you save your data to dash, it will remain intact even when the computer is turned off. When you save your data, जितने तुम डाटा को सेव करो to dash, it will remain intact even when the computer turn off. Option A RAM, option B motherboard, option C secondary storage device, option D primary storage device, and option E none of these. Anyone can give response? When you save data, जितने तुम डाटा को सेव करूचो एबो सेटा कंप्यूटर टर्न ऑफ होले भी जाउनी तो से जिनसटा कोन एक्चुअली you give response as option C is option C होची secondary storage device होची right answer जो थरे की डाटा गोटे थर रहिले से इरेजिंग होइनी किंतु प्राइमरी स्टोरेज जिंदि के RAM सेते डाटा रहिले नष्ट होई जाय तो सेटा परमानेंटली रहिबा कोले सेकेंडरी स्टोरेज को हम कानिया को पड़िबो ताले सेकेंडरी स्टोरेज रहिला परे कंप्यूटर टर्न ऑफ हेले भी तार किछि फरक पड़े नाही so option C is the right answer. Okay, next question for you. The dash folder retains copies of messages that you have started but are not yet ready to send. The dash folder retains copies of messages that you have started but not yet ready to send. Option A draft, option B outbox, option C address book, option D inbox, and option E none of these. The dash folder retains copies of messages that you have started but not yet ready to send. सेटा होची कौन से फोल्डर जो थरे की मेसेज गुडा को कॉपी हे की रही जाए ताकू सेंड करिया पई तमे चाहिथिबो किंतु सेटा सेंड हे पारि नथिबो ताले सेटा को थिरे थिबो Anyone can give response? Option A draft is the right answer. जहां सेव हे की रही जाए किंतु सेंड हे न थाए ड्राफ्ट रे रही जाए. Okay, next question for you. Which of the following must be contained in a URL? Which of the following must be contained in a URL? Option A protocol identifier, option B the letters www, option C the unique registered domain name, option D www dot and the unique registered domain name, option E none of these. Which of the following must be contained in a URL? Anyone can give response? Which of the following must be contained in a URL? You have give response as a C. That is wrong answer. The unique registered domain name no. Option D www dot. Which of the following must contain in URL? Uniform resource liquid locator रे कौन थाए www dot एटा आगे पड़ी थी तापरे जहाँ हबो कारण आमे जानी चे जे सब किछि वेब पेज गुडा को www भितर ही स्टोर थाए the कौन interlinked documents is known as that form is known as www. So www is a system of interlinked documents known as web pages. ताले जो पद्धति रे सब वेब पेज गुडा को एकाडी कराय छै से w तेन जे कोन से गोटे वेब कंटेंट्स को एक्सेसिंग करिया को www डॉट पके की तापरे यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम ता पकेया को पड़े अमुक.com कि समको.org कि समको.net एमते पकेबा को पड़े. So option D is the right answer. Okay, next question for you. Which key is used to combination with another key to perform a specific task? Option A function, option B control, option C arrow, option D space bar, option E none of these. Which key is used in combination with another key to perform a specific task?
Anyone can give response? Question number 9. Who can give the answer? Option B is the right answer. Control by CTRL. CTRL होची एइभली गोटे की जहाँ की कंबाइन करके विभिन्न एक्टिविटी करा जाए जेमने कंट्रोल ए मानले सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी मानले बोल्ड, कंट्रोल सी मानले कॉपी, कंट्रोल डी मानले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन, कंट्रोल ई मानले अलाइनमेंट टेक्स्ट टू सेंटर, कंट्रोल एफ मानले फाइंड, कंट्रोल एपर कोन असला एपर जी गो टू नहीं कि एच रिप्लेस तो कंट्रोल की सहित फंक्शन की तो स्वतंत्र काम अछि जेमति कि F5 मानले रिफ्रेश होउची, F1 मानले हेल्प आसुची, F2 मानले रिनेम होउची तो स्वतंत्र काम अछि आरो की त हमें ऊपर तळ होबा पय आरो की गुडा का यूज करू स्पेस बार तो काम अछि स्पेस दबा पय किंतु कंट्रोल की रो निजस्व किछि नाही बट कॉम्बिनेशन है कि आउट की आसले गोटे किछि गोटे काम से करे स्पेसिफिक टास्क करे ओके लास्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will you require to hear music on your computer? Very simple thing. Option A video card, option B tape recorder, option C mouse, option D sound card, and option E none of these. Which of the following will you require to hear music on computer? Anyone can give response? Someone give response as option C. Mouse को यूज करिवो म्यूजिक सुनिबा पई हाँ माउस को यूज करा जाए द राइट आंसर इज साउंड कार्ड माउस पे क्लिक करा जाए गीत बाजिबो बट कौन से पचार थिला ना कौन आवश्यक अछि गीत सुनिबा पकले यदि कंप्यूटर तम साउंड कार्ड नथिबो ताले गीत बाजिबो नाही किंतु वीडियो बीजे रथिले तमरो पिक्चर भलो आसीबो नाही तो जहां भी हो द टाइम इज वेरी शॉर्ट due to this we have to completed this class from this point and on the next class onwards I will come with another interesting topics for you. Thank you all for joining this class.